नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया और इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और मंदिर की गौशाला में गौ सेवा किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और जनता दर्शन भी किया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है जनता दरबार लगाते हैं और इसी के साथ साथ जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं उन समस्याओं का समाधान भी कुछ का मुख्यमंत्री मौके पर ही करते हैं और कुछ लोगों का जो है आश्वासन दिया जाता है। और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि तमाम लोगों की जो समस्या है उसे पूरा किया जाए। और जनता दर्शन के दौरान और इसी के साथ साथ गोरखपुर के दौरे पर भी खासतौर से वो जो है गौशाला में जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और इसी के साथ साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौशाला पहुंचे, वहां पर जो है गायों को लाड प्यार करते हुए भी नजर आए और इसी के साथ साथ उन्हें चारा खिलाते हुए भी नजर आए। और कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर कथित तौर पर निगरानी रखी जा रही है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हां, हमारे कुछ कौंसलर अधिकारियों को हाल ही में कनाडाई सरकार की तरफ से सूचित किया गया था कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं और जारी रहेंगे, जिसके बाद हमने औपचारिक रूप से कनाडाई सरकार का विरोध किया है, क्योंकि हम इन कार्यों को प्रासंगिक राजनयिक और काउंसलर सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। First, let's take Srinjoy's question regarding latest Canadian target. We had summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday. A diplomatic note was handed over in reference to the proceedings of the Standing Committee on Public Safety and National Security in Ottawa on October 29th, 2024. It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। Ishi, your question regarding certain celebration that you referred in the Parliament.
all along we have been making our point very clear about our views very clear about extremism and the culture of violence and anti-India activities in Canada. This is our core concern with the Canadian government, and we hope that they will take action against these activities. That is how we look at it. The issue on the sanction of 19 Indian companies. We have seen these reports of US sanctions. India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes, the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as well as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. Regular strategic trade, export control outreach events for Indian industries and stakeholders are being carried out by agencies of the Government of India. We are also in touch with the US authorities to clarify issues. That also answers your question, Elena. On deportation of irregular and illegal Indians in the United States, you would have seen that recently we had some deportation from the United States. We have a regular dialogue with the United States on migration and mobility, and the idea behind that is to create more avenues for legal migration. And as part of this, our regular consular dialogue and arrangement, we have facilitated movement of people who are staying in the United States illegally or are part of irregular movement, and this has been going on for some time. We hope that with this cooperation and our engagement with the United States on mobility and migration, we will be able to deter illegal immigration. We have more questions? सर, टेस्ट मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं वो अपनी जगह पे है, उन्होंने हमें एनिमीज के कंट्री की लिस्ट में डाल दिया है। तो हमारे जो टाइज है उनसे ये कितना आगे तक चलने वाला है? ऋषभ। Joint Secretary, good evening. Rishabh from Times Now. So I have 2 questions, both on Canada. One taking forward from Sharma sir. So there is a report that suggests from Canada that India is involved in cyber attack on Canadian government institutions, and they have put us in a bracket which has North Korea, Iran, among others there, and China as well. So how do we respond to that? A, and B, there are reports that Indian diplomats in Canada are under surveillance. If we can have more details on that. Hasni. Mr. Jaiswal, this is Suhasini Heather from The Hindu. You referred to the demarche against the Canadian CDA on the basis of the officials talking about leaking reports. Now, in the reports that they have purportedly leaked is the description of a 5-hour meeting between National Security Advisor Ajit Doval and Canadian intelligence officials in Singapore. And they've given a specific date in October. I wanted to get a sense from you, firstly, did the NSA in fact meet with Canadian officials in October?
to discuss the case and in particular the details about a gang run by a man called Lawrence Bishnoi. And if so, I wanted to get a sense from the government if for the last year the government has consistently said that Canada has given no evidence, dismissed any allegations made by Canada in the Niger killing, then why did the NSA actually go all the way to Singapore to meet with Canadian intelligence? Thank you. This is Raghavendra Verma from ZDF German television. This is regarding India-China relations. So following the disengagement at the border, has or will the economic ties improve? Has some measures already been taken? There were reports of denial visa for the Chinese technicians in India. And connected to this is the conversation between the Indian and German ministers in the metro talking about the delay in the machinery from German machinery made in China to India. How serious is that and whose jurisdiction is it to speak to the Chinese about that delay? What the Germans will do or Indian government has already done, or what else is being done to normalize the economic relations, and will that happen follow up soon? Please. सर अशोक जी से मेरे दो सवाल हैं। एक, क्या यूएस ने अभी लॉरेंस बिश्नोई के भाई के बारे में किसी तरीके का डिटेल शेयर किया है फॉर एक्सट्रेडिशन? मुंबई पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। दूसरा, भारत की एक निजी कंपनी है जिन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो, इस पर किसी तरीके की जानकारी एमए को है? दूसरा सवाल अब क्या था? एक निजी कंपनी है, एनर्जी कंपनी है, जिन्होंने ये कहा है कि बिजली लेना है तो पैसे दो। ठीक। मोहन एंड ऋषभ, आप दोनों का सवाल एक है कि कनाडा ने भारत को एक अलग किस्म के कैटेगरी में डाला है, उसके बारे में आप हमारी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, ये अपने साइबर का उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत किया है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर ऋषभ, फॉर यू एज वेल। वी सी दिस अपीयर्स टू बी अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैनेडियन स्ट्रेटजी टू अटैक इंडिया। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, देयर सीनियर ऑफिशियल्स हैव ओपनली कन्फेस्ड दैट दे आर सीकिंग टू मैनिपुलेट ग्लोबल ओपिनियन अगेंस्ट इंडिया। As on other occasions, imputations are made without any evidence. तो अनर्गल बात कह के मोहन जी और निराधार बात कह के आप हम पर आरोप थोप रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। Rishabh, on your questions regarding surveillance, yes, some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. To answer your question regarding the meeting, yes, the meeting did take place. I had in fact confirmed this earlier also in the earlier presser that we had. And again reiterate that Canada so far has not shared with us any shred of evidence in the matter that you referred to. Raghavendra, on economic ties. Why would you meet with them? Sorry? There are several issues that you discuss when you meet. Raghavendra, a question on India-China
economic ties. We had also issued a press release after our leaders met in Kazan. As agreed at the leaders' meeting in Kazan, relevant dialogue mechanisms at the level of foreign ministers and other officials will be utilized or used to stabilize and rebuild bilateral relations. We will let you know more when these mechanisms meet. We'll let you know when these mechanisms meet to deal with issues of each other's interest and concerns. So let these meetings happen, and then we'll have further developments in regard to the question that you asked. As far as development regarding machinery, etc., see, India-Germany collaboration or economic cooperation is a large canvas. We have several issues which arise from time to time. These issues are resolved, these issues are solved in an amicable manner. Hopefully, whatever issues that are there, it will also be resolved to the best of satisfaction of both sides. अशोक, आपने बात कही अनमोल बिश्नोई की. ये जो मसला है, इन सब चीजों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है, और इन सब बातों, ये सब जो बातें हैं ये लीगल डोमेन में आती है, और चूंकि लीगल डोमेन में आती हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है उसके तहत इस मसले पे कार्रवाई होगी. जहां तक आपने बात कही बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है. एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है. भारत सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भाग, इस कॉन्ट्रैक्ट के में हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए मेरे पास आपसे इससे ज्यादा शेयर करने के लिए कोई अभी इस वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अभिषेक. Hi, sir. Abhishek, independent journalist. My question is regarding Canada. There are reports that Canadian government has reduced number of visas they used to issue to the Indians. And also, if you can share some insight on that. And also, recently, Canadian opposition leaders have cancelled a scheduled Diwali event in Canadian Parliament. So, if you have any comment on that. Keshav. Good afternoon, sir. Keshav Padmanabhan from The Print. This is also on Canada. The National Security and Intelligence Advisor at the hearing said that they had attempted to meet with the Indian side on the 8th of October, but no visa was given. And then on the 10th of October in New York, their officials appeared, but the Indians didn't come. And then finally on the 12th, they met in Singapore. So can you just sort of confirm whether this timeline is indeed correct, and if there are any comments or reasons regarding their allegations of the same, sir? Thank you. नीरज. सर, अभी इजराइल में हिजबुल्ला की तरफ से किए गए हमले में 4 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है. चारों थाईलैंड के थे. भारतीय कामगार भी वहां काम करते हैं. उनकी स्थिति कैसी है? उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से भारत सरकार नजर रख रही है? क्योंकि हाल के वक्त में भारतीय कामगारों वर्कर्स की संख्या भी इजराइल में बढ़ी है. क्या आप लेबनान की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं? ठीक है. This is Tomomi Asano from the Japanese newspaper Yomiuri Shimbun. My questions are about the BRICS summit which happened last month. After the closing of the BRICS summit, some medias are reporting that the names of the 13 countries listed as partner countries. So I just want to know, is this list finalized or not? And if not, when? What is the remaining procedures, and when will it be disclosed officially? And I also want to know India's understanding for the definition of partner countries. What is the difference between the member countries? Thank you. Ajay. Sir, good evening. I'm Ajay Banerjee with the Tribune. I seek a small clarification. The Foreign Secretary in his press briefing at Kazan had said the right time will come for the regard to India-China talks for the next steps at the LAC.
You just said that the bilateral meetings, let them take place and time will come. Have we set a timeline with the Chinese of the next two steps, the de-escalation and de-induction of troops around the LAC? Is there a timeline to it, or? You already asked a question. We'll come back to you. Abhishek, your question regarding Diwali celebration, which was cancelled. We have seen some reports in this regard. It is unfortunate that the prevailing atmosphere in Canada has reached high levels of intolerance and extremism. That is what I have to say in response to your question. The other question you also raised about reduction in number of visas by the Canadian government. We obviously are monitoring the well-being of our student community in Canada, as also the well-being of our professionals who are working in Canada. Our concern for the safety and security remains very strong. और वही थाना दादरी क्षेत्रांतर्गत ओमेक्स पास ग्रेन सोसाइटी ग्रेटर नोएडा में सूर्या भटाना द्वारा महिला मित्र के साथ मारपीट करते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना दादरी पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को हिरासत में लिया गया है। युवक और युवती पूर्व से परिचित है, कॉलेज से साथ पढ़े हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महिला मित्र के साथ मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद से वीडियो भी वायरल हुआ था और वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पूरे वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और इसी के साथ साथ आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई। महिला मित्र के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई थी और इसके बाद से आरोपी को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ये वायरल वीडियो बताया गया और बताया जा रहा है कि महिला जो है पहले से ही उसके साथी थी और दोनों एक दूसरे को जानते थे। और वही बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है वो दिखाता है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहेगी तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। मित्रों, दीपावली के पर्वों की श्रृंखला चल रही है और आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व है और ये मां लक्ष्मी यानी वित्त के समायोजन कैसे किया जाना चाहिए उसकी प्रेरणा देने वाला पर्व है, ताकि समृद्धि कैसे आए। और उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, चूंकि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स को के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे, जिन्होंने
वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी